Hello and welcome to this channel, Buddha Tutoring Club. In this channel, we will discuss about decimals, which can also be known as decimal numbers. So in this video, we'll discuss about introduction of decimals, classification of decimals, classifications of recurring or repeating decimals, then explanation of repeating and non-repeating, terminating and non-terminating decimals, and classifications of recurring decimals as pure decimals or pure recurring decimals or mixed recurring decimals. I think this video will make you understand to make the sequence of your understanding properly. डेसिमल्स को समझने के पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंटीजर्स से शुरुआत करना बेहतर है। इंटीजर्स जो आप पढ़ चुके हो, जिसको हिंदी में पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इंटीजर्स का जो क्लासिफिकेशंस है वो है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या नहीं होने के संख्याओं को, यानी जो संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है, उसको भी हम लोग कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। द नंबर्स दोज आर नॉट इंटीजर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज, सच एज फ्रैक्शंस, जिसको हम लोग हिंदी में भिन्न बोलते हैं, डेसिमल्स, जिसको हम लोग दशमलव बोलते हैं, एंड इर्रेशनल नंबर्स, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये रियल नंबर्स का ही पार्ट है। पहला प्रकार है भिन्न, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ये भिन्न और फ्रैक्शन तीन प्रकार के हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लें तो 1/2 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/4 is a proper fraction, 2/3 proper fraction. Why? Because denominators in these fractions are greater than the numerator. अगर हम improper fraction की चर्चा करें और उसके एग्जाम्पल्स को कंसीडर करें तो 5/3 is an improper fraction, 7/4 is an improper fraction, 9/2 is an improper fraction. Why? Because denominators here are smaller than the numerators. I think it is clear what is proper fraction and what are improper fractions. Now mixed fractions, if you consider examples, then 2 hold 1/2. 3 hold 3/4, 1 hold 2/3. These are mixed fractions. So there are three kinds of fractions, and those are proper fractions, improper fractions and mixed fractions. ये तीन प्रकार के जो फ्रैक्शंस हैं, इस सभी फ्रैक्शंस के प्रकार को हम लोग डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन के एक एग्जांपल को कंसीडर करें 1/2, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू 0.5। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम लोग लें जैसे 5/3, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू 1.67। मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर हम लोग लें 2 होल्ड 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2.5। तो these are the numbers
0.5, 1.67, 2.5, these are the decimals. तो डेसिमल्स जो है वो फ्रैक्शंस और पार्ट्स ऑफ ए होल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को ये डेसिमल सेपरेट करता है. अगर हम कंसीडर करें एक डेसिमल पॉइंट को, इसके लेफ़्ट साइड में डिजिट्स हैं, राइट साइड में भी डिजिट्स है. डेसिमल के जो डिजिट है, जो नंबर है, उसको होल नंबर बोलेंगे, होल नंबर पार्ट बोलेंगे. और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जो डिजिट्स है उसको फ्रैक्शनल पार्ट्स बोलेंगे. ये होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, इस दोनों को सेपरेट करता है डेसिमल पॉइंट. तो डेसिमल पॉइंट इज द पॉइंट दैट सेपरेट्स द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट. सो ईच डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट has a place value such as tenth, hundredths, thousandths and so on. Decimals can be classified into different ways, different types. Terminating decimals, recurring decimals. Recurring decimals can also be called as repeating decimals. And non-terminating, non-recurring decimals. In this way we can divide into three sections, you can say. First one is terminating decimals, second is recurring decimals, third one is non-terminating and non-recurring decimals. अगर इसको हम लोग इस तरह समझें कि डेसिमल्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अगेन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू सेक्शंस, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग और repeating decimals or recurring decimals, and second part is non-terminating decimals and non-repeating decimals. That terminating decimals are decimals that have a finite number of digits after a decimal point. Recurring decimals are decimals that have a repeating pattern of digits after a decimal point. Non-terminating, non-repeating decimals are decimals that have an infinite number of digits after the decimal point. So in this chart, this can be converted in the form of P by Q. This can also be converted in the form of P by Q, whereas non-terminating and non-repeating decimals are known as irrational numbers. However, the numbers those can be converted in the form of P by Q, they are called rational numbers. Recurring decimals can be classified into two sections, that is pure recurring decimals and mixed recurring decimals. Now we'll understand pure recurring decimals with examples and mixed recurring decimals with examples. Pure recurring decimals are decimals that have a recurring pattern immediately after the decimal point. For example, 0.3333 ... So here 3 repeats immediately. 0.666 ... So in pure recurring decimals, the recurring patterns start immediately
after the decimal point. Mixed recurring decimal are decimals that have a combination of non-recurring decimals and repeating digits after the decimal point. So non-recurring digits and recurring digits, there is a combination of non-recurring digits and recurring digits just after the decimal point. For example, 0.583333 ... Here 58 are non-recurring digits where 3 is a recurring digits. So there is a combination of non-recurring digits and recurring digits just after the decimal point. So in mixed recurring decimals, the recurring pattern starts after the non-recurring digits. That is called mixed recurring decimals.